फिल्म का नाम है शौर्य और ये एक कोर्ट मार्शल के बारे में है. इट्स अ कोर्ट मार्शल इन द इंडियन आर्मी सेटअप. सो वीव सीन फिल्म्स ऑन द आर्मी. हमने बहुत सारी फिल्म्स आर्मी पे देखे हैं जो जो वॉर के बारे में बात करते हैं, जो बॉर्डर्स पे दिखाई देते हैं. बट दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म दैट यू आर सीइंग इन पीस टाइम वेयर देयर इज़ नो वॉर, but how the army deals with a different aspect, how army deals with justice within its own system by the people that they incorporate. And I play the role of काव्य शास्त्री, जो एक पत्रकार है, एक हिंदी डेली में. और ये क्षेत्रीय संवाददाता है और ये जानती है कि ये बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, लेकिन उनको अभी तक अपनी ड्यू नहीं मिली है. तो ये इस केस के ऊपर एक कहानी कर रही है. शी सीज दिस केस एज हर टिकट टू द फ्रंट पेज एंड टू गेटिंग अ बाय लाइन. और कैसे फिर ये केस ज़्यादा बनने लगता है उसके लिए. शी स्टार्ट्स टू टेक इंटरेस्ट इन द केस टू द एक्सटेंट पर शी वांट्स टू सी जस्टिस डन. फिल्म काफ़ी मेल डोमिनेटेड लग रही है जहाँ तक प्रमोशंस का सवाल है. आपको क्या लगता है, आपका कैरेक्टर कहीं जाके उलझ गया है या और यू आर प्लेइंग एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर? काव्य शास्त्री इज़, यू कैन कॉल her द मॉरल फोर्स ऑफ द फिल्म. क्योंकि जब तक ये लिखती नहीं है इस केस के बारे में, इट वुड हैव जस्ट बिन अ हश हश अफेयर एंड इट वुड हैव डाइड डाउन. शी इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द कैरेक्टर ऑफ सिद्धांत अवेयर, इन वेकिंग हिम अप. She's instrumental. She helps him research the case, and they collaborate together and they work on the case together. So throughout the narrative, her presence in the film is the backbone for the character of Siddhant Chaudhary to wake up and do something and not just let this case go away. Something with the characters KK, Rahul and Javed. All You paired opposite Rahul. I'm paired opposite Rahul, and everyone in this film is a fantastic actor. I mean, I've been in very august company as far as our actors are concerned, and I think it helps so much because then all their energies, they rub off on you and you work together and you collaborate together to make your scenes work and to make a film work. फिल्म के बारे में ज़्यादा बात करें, इट्स नॉट द रन ऑफ द मिल काइंड जैसे Yes. आजकल फिल्में आ रही हैं. Yes. कुछ डिस्टिंग्विश्ड लग रही है. तो आप एज अ व्यूअर क्या कहना चाहेंगे फिल्म का, कैसे आउटस्टैंड, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ मल्टी स्टारर्स टुडे एंड कितनी हाईटेक फिल्में हैं सर. तो कैसे आपका व्यू क्या रहेगा फिल्म के बारे में कि एज अ व्यूअर व्हाट वुड यू लाइक टू से? I would say that I like a lot of films that we make in Bollywood today. मुझे बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं और द व्यूअर हैज़ द राइट टू चूज़ एवरी काइंड ऑफ फिल्म. दे हैव द राइट टू बी एंटरटेन्ड. दे हैव द राइट टू वॉच फिल्म्स दैट आर आउट एंड आउट कॉमेडीज, टू वॉच हिस्टोरिकल्स, रोमांटिक कॉमेडीज. एंड वी एज फिल्म मेकर्स ऑल्सो हैव, एंड वी इन द इंडस्ट्री ought to entertain the masses, ought to entertain people. That's what we are here for. But we also have a responsibility to also make films that have some sort of social relevance, have some sort of message, and yet are entertaining, packaged in a manner that a viewer enjoys watching the film. फिल्म का एक सीरियस लुक है, बट एज अ लीडिंग लेडी व्हाट वुड यू से? आई मीन टॉक अबाउट द म्यूजिक, गाने जो आप पे फिल्माए गए हैं, इज देयर अ शेड ऑफ रोमांस आल्सो इन द मूवी? Definitely, there is romance between the character of Rahul Bose and myself. But because the film deals with larger issues, the romance is a very subtle track that is played along. Because when two characters come together in situations of strife, they come together for a common cause. These two characters start off by hating each other. So from there, it progresses to mutual acceptance of each other, progresses to working together, collaborating with each other, and then it progresses to a personal relationship blossoming somewhere out there. But it is done very subtly. It's sort of an undercurrent because in the larger scheme of things, this is a small thing that is building out there. So it's a very mature romance, I would say. It's not an obvious in your face sort of romantic track. परफॉर्मेंस का जहाँ तक सवाल है, यू वर्किंग विद ऑल द एस एक्टर्स, आई मीन ऑल थ्री ऑफ देम हैव प्रूव्ड एंड यू नॉट सो यू बीन जस्ट लॉन्च्ड फॉर व्हाइल अगो, सो कहीं जाके कोई डिफिकल्टी आई विद यू नो, और इट वाज अ गुड केमिस्ट्री बिटवीन ऑल ऑफ देम?
I think making a film work is a collaborative effort. You cannot do it single handedly, and it starts off from your director who has a vision. It starts off with your writers who give your characters shape. It starts off with your screenplay writer who makes your scenes possible, and then later on your actors who come in. So it's everyone working off each other's energies, from the directors to the writers to the actors. So it is a collaborative effort. It helps when everyone has given you something solid to work with, and it helps when you're working with actors who are constantly, in a frame of creativity. It helps. आपका कैरेक्टर भी टाइटल से कहीं जाके रिलेट करता है बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड, कहीं जाके टाइटल से रिलेट करता है विद स्टोरी. For Kaavya Shastri, courage for her is the ability to speak the truth, is the ability for her to be who she is without succumbing to the pressures of her job, without succumbing to political pressure, without succumbing to the pressure of not being able to tell the truth through what she does. Okay, and last but not the least, how would you, I mean, say about the movie? I mean, what would be your take on it? I mean, because it's not out and out commercial. तो क्या कहना चाहेंगे finally? Why would the people go to the theaters and watch it? People would go to the theaters to watch Shaurya because it's a film that speaks about something. It's not a film with no relevance. It's a film of relevance, and yet it's a film that's an entertainer because it also speaks of relationships that various characters have with each other. It has its light moments, its fun moments, its crazy moments, but at the end of the day there is a point to the film. The film is making a point, it is making a statement, it is saying something.